This is a usual morning for Nasiruddin Ali and Chedi. It's 6 a.m. on a Monday and both farmers are taken up by the job at hand, spotting nests of the Sarus Crane, the only resident breeding crane in India and the world's tallest flying bird. For the past 11 years, the primary task for these farmers has been in ensuring that every egg of the Sarus is safe. Chedi spots a bird right behind him and is now certain there must be a nest close by. टार्च मिलल बा लेके आउन से देखे नहीं सेबे बचाव नहीं सेबे ओके ताकि केहू ओके पकड़ न पावे मार न पावे ओकरे बाद देखभाल करी सेबे बचता न सब आराम से रहता न बहुत अच्छा लगता है. Such easy sightings, however, weren't always so common. Not even here in Uttar Pradesh, the state with close to 70% of all the Sarus cranes in the country. In fact, till a decade ago, such close proximity of the bird to the farmlands would drive farmers to either shoo them away, steal their eggs, or go as far as kill them. सबके समझावल जाला कि उस देश के राजा हवे सब वो सबन के रहले से कोनो तकलीफ बा नहीं सब नुकसान करे वाला नहीं हो सब कितना खई है अपने खइए पेट भर खइए चल रही है और समय खेती बाड़ी कहाँ बा कहाँ खइए कहाँ रही है ये तालाब में रहे सब खाना पिए अपन रहे सब. The red-headed Sarus crane, towering at over 5 feet on average, usually nests in natural inland wetlands or in paddy fields, where the tall rice crop ensures that their eggs remain protected. Using straws and grass from their surroundings, each nest is about 2 meters in diameter, a point of contention for farmers who often fear crop destruction. This conflict has been one of the reasons for the Sarus being categorized as vulnerable by the IUCN on its red list. According to WWF, not more than 15 to 20,000 survive in the country today. But well-known scientist Gopi Sundar, who has been researching Sarus cranes across South Asia and Australia since the late 90s, points to the more uncharitable reasons for these dwindling numbers. So some of the biggest threats for Sarus cranes, therefore, not surprisingly, are because of the way in which human beings are using the landscape and how they change the use of the landscape. So in Madhya Pradesh, for example, when rice and wheat was replaced by the cash crop soybean, we see that the number of cranes that exist in that entire state, in the area that is cultivable, has reduced quite a lot. When it comes to threatened habitats, however, it is the shrinking of our wetlands that is ringing alarm bells among conservationists. A slow death of wetlands not only means a slow death of vital ecosystems, but also that of the Sarus's primary habitat. देखिए वेटलैंड का जहाँ तक इम्पॉर्टेंट है नटशेल में कहें तो जिस तरह से शरीर में किडनी काम करती है फिल्ट्रेशन का तो वेटलैंड भी वही फिल्ट्रेशन का काम करता है. एक तो बेसिक ये है. दूसरा कि नेचुरल रिसोर्सेस उसमें इतने हैं ना कि कहीं ना कहीं उसके लाइवलीहुड को भी जोड़ा जा सकता है. जैसे कमल है, लोकल कमल होता है तो कमल गट्टा जब कमल का फ्लावरिंग हो जाता है जो फ्रूट बनती है वो मार्केट में सेल आउट करते हैं. थर्ड ही देखें आप तो अगर वेटलैंड ना होगा तो उस एरिया का ग्राउंड वाटर रिचार्जेस कम होंगे. With a wetland landscape sprawled across 2,200 square kilometers, there's a reason why the Sarus is the state bird of Uttar Pradesh. Over the last 4 decades, however, according to Wetlands International, a non-profit, India has lost 1/3 of its natural wetlands. And if we lose our wetlands, the Sarus too will be lost. We follow Arshad as he takes us to a nearby wetland that now looks more like a garbage dump. प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आज से कुछ साल पहले ये वेटलैंड एक नेचुरल शेप में था लेकिन किंतु जब से इसकी लीज आउट हुई है तो लीज़र ने इस वेटलैंड का नेचुरल शेप बिल्कुल चेंज कर दिया. ये छोटे छोटे पॉन्ड्स में कन्वर्ट कर दिया. आप खुद आगे चलेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पे साफ देख सकते हैं ये वेटलैंड एरिया यहाँ पे है जो छोटे छोटे शेप में चेंज कर दिया लीज़र ने और जस्ट उसके बगल में ही ये वेस्ट मटेरियल डंपिंग हो रही है. In India, the Sarus is known to nest on wetlands outside of protected areas.
While the remoteness of these stretches seem inviting to the birds, it also means vulnerability to anthropogenic degradation. तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक साइड एग्रीकल्चर लैंडस्केप है, आपके लेफ़्ट साइड में देखिए एक्वाकल्चर हो रहा है और फिशिंग पॉन्ड भी है। लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट यहाँ पे ये हो गया है कि एक तो नेचुरल शेप चेंज हो गया, प्लस कॉर्पोरेशन की डंपिंग सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो है वो डंपिंग हो रही है। One of the significant chapters of this project is to notify unprotected wetlands under the Wetlands Conservation and Management Rules to protect against exploitation. So far, WTI has notified 37 of the 51 identified wetlands in the region. At the heart of this conservation program, however, as WTI tells us with pride, are the people who are trying to win back the Sarus. Chedi and Nasruddin are only two of a group of more than 150 youngsters who have turned themselves into Sarus Mitras, or Friends of the Sarus, a local community invested in protecting the bird and its habitats, as part of a statewide project by the Wildlife Trust of India. एग्रीकल्चर के लिए वो एक इंडिकेटर हमारा है सारस, कि अगर सारस है मीन्स वहाँ पे पानी भी है, अब पानी है तो वहाँ पे सब कुछ है, इसलिए दूसरा इंडिकेटर हमारा था। तो इस तरह से हमने कन्विंस किया किसानों को, लोकल पब्लिक को, तो आज वो हमारा रिजल्ट है। Since 2013, more than 20,000 farmer volunteers across 10 districts in Uttar Pradesh have begun taking a personal stake in the project. Ravindra Kumar Kanojia is a member of his village wetland committee, one of the several created by WTI to ensure direct engagement with farmers and wetland owners. हम लोग कुल सदस्य 15 लोग हैं और 15 लोग हर महीने का जो है बैठक किया जाता है। महीने में तालाब का पानी भी जांच किया जाता है और गुणवत्ता जो है उसका देखा जाता है क्या है। Associated with the Wetland Committee for the past 8 years, Badr Sahni tells us how he has witnessed a change in not just human behavior but also crane population. खतरा तो सर किसी से नहीं उसके जो जानवर धरते हैं, जितना साफ होते हैं, सियार होते हैं, उसी से खतरा है। मैंने वो मनुष्य ना उसको पकड़ सकते। अब तो आपको अब बताए थे, पता नहीं किधर गया, इतना बड़ा बच्चा उसके साथ है, 2 हैं 3 हैं, कम से कम मान चलिए पीठी पर कहीं लोग को नहीं, आपको बता देते हैं कहीं चला गया चरने। तो इसी हम लोग रहते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, मैंने डांट मानते हैं, ये बात नहीं है, आज से नहीं, आज बहुत दिन से मैं डांट मानते हैं। मैंने किसान लोग कुछ नुकसान करते हैं तो किसान उसको मारते हैं नहीं। From the first census of 2013, the population of the Sarus has grown from 600 to 2,500 in eastern UP, a region that was largely neglected in Sarus conservation. Arshad Hussain, a sociologist with WTI, deserves much of the credit. Realizing the importance of changing human mindsets, Hussain has been drawing heavily on the cultural and social associations locals have had with the Sarus. कि लोगों का कंसेप्ट था कि हाँ, एक हंस मर जाता है तो दूसरा भी ये जो है मर जाता है। तो मैंने यही कहा कि अगर आप इसको नहीं बचाएंगे तो कल एक अगर मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा। तो क्या हम चाहते हैं कि ये नहीं रहे हमारे पृथ्वी पे? तो नहीं साहब, कैसे रहेगा? ये तो 2 हंसों का जोड़ा, ये तो हमारा राज्य है। तो हमने कहा इसी को सोच कर बचाओ। चीज़ भी मैंने ये भी कहा कि आप सिद्धार्थ को देखो, एक ने मारा था, एक ने बचाया था, तो ये तो बचाने की प्रवृत्ति शुरू से चली आ रही है, तो क्यों नहीं हम भी बचाएं? The legend around a young Siddhartha saving a wounded Sarus resonates strongly with the locals. In fact, in Buddhist communities and countries like Nepal and Vietnam, the Sarus is a symbol of reverence. About 200 kilometers from Nepal, however, in Uttar Pradesh's Maharajganj district, saving the Sarus is not so much an act of faith as it is one of willing participation. There is no exchange of money here. Armed with torches, raincoats and binoculars gifted to them by WTI, in addition to regular felicitations by the Forest Department, every farmer participation is voluntary. And so what happens in that particular pair, which now we've noticed in many other pairs around South Asia, is that they seem to invite or allow a third bird into their territory after the eggs have hatched. And this particular third bird seems to be useful to help raise the chicks. The Sarus has always been known to be monogamous.
In fact, a pair is likely to be spotted in the same nesting areas with the same partners every year. But recent studies are now suggesting how degraded habitats might have triggered a new social order for the species. So the evidence seems to suggest that the cranes have learned to figure out that their territory does not have enough food for 2 birds to feed the chicks, and so they need a 3rd bird as a helper. Sundar, however, is not too worried yet, telling us how changing behavior is emblematic of the resilience of these birds. Moreover, with a growing tribe of dedicated Sarus Mitras, perhaps it won't be long before we hear a new song from the Sarus. क्योंकि ये अपना जो है पक्षी विलुप्त होते जा रही है। अगर उसको जो हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे देश में जो है पक्षी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उनका अपना घर नहीं होता। हमारा खेत ही जो है उनका घर है, और हमारे खेत का जो अनाज है उनका भोजन है। Thanks for watching Eco India. If you like the story, please give us a thumbs up and subscribe to Scroll.in on YouTube.